In our first session of revision, we had talked about the basics of the topic number 1, principles of management, wherein we understood the concept of the nature of these principles, that what are these principles. We also talked about the significance of these principles of management, which provide you a kind of standard guideline based on which you can work, based on which you can understand the things how to carry on. Today, we'll basically be talking about the principles laid down by both the prominent people, that is, the principles laid down by Mr. Henry Fayol and the principles laid down by Mr. Frederick Winslow Taylor. Let's start now. Today will be our discussion with today we'll be finishing up our discussion with reference to the chapter जो मैंने आपको brief discussion की बात कही थी. So in our next session we'll be starting with the questions and answers exercise. और हम लोग बहुत कुछ लिखने वाले हैं, ये मैंने कल ही बता दिया था. So let me come on now directly to the principles which are laid down by Mr. Fayol. Basically what happens is, फयाल साहब ने जब प्रिंसिपल बनाए थे तो उन्होंने उनका जो इंजीनियरिंग का तजुर्बा था, he being an engineer, he was working as a very good at a very good post in the organization, and he laid down, based on his experiences, based on his understanding, he laid down the different principles of management. So let's first understand what Mr. Fayol was. He was basically a French mining engineer. Now, why I've written this is because this is required from the perspective of introduction. Suppose you have got a question, write any 5 principles laid down by Fayol, Henry Fayol, or write any 5 principles of management. If this is a question, then in that's a question for 4 marks. In that question, you will be expected to write the introduction of Fayol Sahab also. Same ways it will apply to Frederick Winslow Taylor also. But because we are talking about Fayol's principles, we will first focus on that. Whenever you are writing an answer, there has to be some kind of introduction to that answer, especially if I'm talking about the subject of OCM. Because what happens is, now every answer cannot have an introduction. Whenever the question is having some introduction given to you in the textbook, then in that case it is expected that you should be giving the similar kind of introduction to your answer as well. Like if you take an example, suppose you're writing about, suppose the question comes that write a note on the fire insurance. In that case, you have to give a note on insurance as well. Only after that you can write the note in detail. So you have to start, write down, point to remember. Now this kind of points will keep coming. You just make a kind of sheet on this, 1 or 2 pages will be sufficient. Write down. Whenever an elaborative question is asked, or if the question is related to the note on something, comma, give a brief introduction to that answer. And when I've used the term brief, it means it should be a brief introduction. Otherwise, तुम आधे पन्ने तक introduction दे रहे हो, उसके बाद में 3 लाइन में तुमने वो content खत्म कर दिया. That kind of thing should not happen. Give a brief introduction to the answer. Right? मतलब ये तो ऐसे हुआ, आपसे पूछा गया कि चपाती किस किस तरह के अनाज की बनती है, एंड यू स्टार्ट चपाती मतलब एक खाने का पदार्थ. We can make the chapati in the round shape, it can be made in triangle. The chapati can also be made with the help of some oil and all so on and so forth. फिर आपने वो चपाती कैसे बनती है उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, और उसके बाद में आप डिटेल में आए कि चपाती कैन बी मेड आउट ऑफ व्हीट, इट कैन बी मेड ऑफ मैदा, इट कैन बी मेड ऑफ राइस फ्लावर. खत्म.
मतलब चपाती किस किस अनाज की बनती है इसके बारे में आपने 2 लाइन में बात करके खत्म कर दी और बाकी सारा सिर्फ चपाती 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 कर रहे थे, राइट? ये रिसेंटली सीखा हूं इसलिए मुझे पता है. सो द पॉइंट दैट आई वांट टू हाईलाइट इज द पॉइंट दैट आई वांट टू नो नो अरे हर्षद तू जो बात कर रहा है ना सर इतना डिटेल में हम लोग सोच ही नहीं पाएंगे भाई. हम लोग जब एग्जाम में बैठे होते हैं ना हम लोग दसों दिशाओं में काम करते हैं. हमारा दिमाग इतना स्पीड में चलता है कि चाचा चौधरी भी पीछे रह जाए. दैट काइंड ऑफ थिंग. And that's why I clearly said that you have to write a brief introduction, right? Okay. So he was basically a French mining engineer who was later on converted into an industrialist and a successful manager. He started as a mining engineer and went up to the position of the CMD. अब ये सब याद नहीं रहता है. He started with a mining engineer and went up to a very top position in the organization. You can write like that. There's no problem on that front. And conducted various experiments and observed various organizations because he had worked in multiple organizations, so he must have observed the multiple of the organizations, and based on that he proposed the 14 principles of management. Of that, 5 following are enlisted. This is how you should be starting with your answer. I hope this is working for you. Like कई बार होता है कि हम लोग आंसर की स्टार्ट कहां से करें. तो मैंने मेरी रिवीजन की स्टार्ट ही आंसर की स्टार्ट कहां से करें उससे किया है. जस्ट वन मोमेंट. सो that's how you are supposed to approach. See, what happens is we are able to write anything and everything that we know, but the point is what if we are writing it sensibly, strategically, that's more feasible. Then the next point that is to be understood is that he is surely, now this point should always come into your answer whenever it is about Fayal, that he is the father of management. And same ways Taylor is called as father of scientific management. This is where students get confused. और एग्जाम में मैंने कई बार देखा है there are so many examiners who have pointed out this as a point और उस वजह से मार्क्स कट करते हैं. फयाल इज ऑल्सो अ पप्पा, टेलर इज ऑल्सो अ पप्पा, पर दोनों के बच्चे अलग अलग है. फयाल इज द पप्पा ऑफ मैनेजमेंट, whereas Taylor is the papa of scientific management. So do not forget scientific, right? मतलब वो मनीष और मनीषा इन दोनों में फर्क होता है. दोनों में मनीष आ गया मतलब सेम हो गया, ऐसा नहीं होता है. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. These principles serve as a guideline to the various managers. That's the basic point, that principles of management, whichever have been laid down, are guiding n number of managers who have been working in the current scenario. The next point, now let's start talking about these principles of management. The very first principle that he had laid down was division of work. Now, why this principle is important? Understand a point that if you want to get a particular activity at a time, at a right time, at a faster pace, for that purpose, the person who is carrying out your activity has to have the expertise in that. Like take for example, एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ. घर में अगर आपको कभी पेरेंट्स ने कह दिया कि बेटा ये कपड़े हैं, इनको आप घड़ी मार के रख दो, वो आप उसकी जो घड़ी करते हैं उसको प्रॉपर बना के रख दो, उसको फोल्ड करके रखना है. अब जब आप उसका फोल्डिंग करते हो, इफ यू डू द रैंडम फोल्डिंग इट विल गेट डिसमेंटल्ड इमीडिएटली. एंड अगर आपको सही तरीके से घड़ी सिखाई गई, सही तरह से फोल्डिंग सिखाया गया, तो आई एम सॉरी, you take more time for that. However, if you are practicing that thing on a recurring basis, on a regular basis, you get used to that or not. Same ways, if you take the example of a company where they are cutting the metals. अब कोई एक बंदा है, उसको आपने कहा कि भैया मेटल भी कट करना है, उसको फोल्ड भी करना है, फिर उसको उसमें आपने खांचे भी मारने हैं और उसके बाद में उसकी आपने रैक बनानी है. If a single person is doing everything of this, then one, he's moving from one place to another, that movement is taking time. Two, he's required to have the knowledge of all the things at the same time. And three, when he's changing over from one job to another,
at that time his speed gets slowed down because he's changing over the things. बट यही अगर आपने चार अलग अलग बंदे रख लिए, एक बंदा वो पतरा कट करता है, दूसरा बंदा उस पतरे को फोल्ड करता है, तीसरा बंदा उसमें खांचे करता है, चौथा बंदा उसको असेंबलिंग करता है, देन each one is doing only one part of it, and that will bring more efficiency and more capacity. And that's why the principle of division of work becomes one of the important principle of management. Am I right? So work should be divided in the different kinds as technical, financial, commercial. Based on functions it can be divided. It can also be assigned to the employees based on their skill set. जिसके पास जो अक्कल है उसको आप वो काम करने दो, या जिसको आपने वो अक्कल दी है उसको वो काम करने दो. That is why it is said that work should be assigned based on the skill set of the employee. It it helps in improving the efficiency and expertise of employees and increases the productivity. मैंने जो आपको एग्जांपल बताया कि आप चार अलग अलग बंद, हाँ इससे आप कहोगे सर उसका कॉस्ट भी तो बढ़ रहा है, तो आपका जो अकेला बंदा काम कर रहा था उसकी स्पीड भी तो कम थी ना, वो आपका प्रोडक्शन कम करके दे रहा था. अगर प्रोडक्शन कम हो रहा था तो सेल्स कम होगी, सेल्स कम होगी तो रेवेन्यू कम होगा, रेवेन्यू कम होगा तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंडिचर कैसे पूरे कर पाओगे. Instead of that, if you are having multiple persons carrying out the activity, you'll be having more production, more sales, more revenue, right? So it goes as a vicious circle. And for that purpose, it is said that when you are making the division of work, when you are dividing the work amongst the employees, a person is carrying out the activity who is having the good knowledge, skill set about that particular activity. And second, that person will be giving you the better productivity and efficiency. Am I right? I hope I'm going good for the principles. Yeah. The next principle of management is the authority and responsibility. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? तो जिस व्यक्ति को मैंने एक कोई काम करने के लिए दिया है, I expect that person to carry out that activity and should be taking the responsibility of that. So authority and responsibility go hand in hand. अगर आपने किसी व्यक्ति से कोई काम कोई पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट करने को कहा है, मतलब आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो उस काम को किस ढंग से कंप्लीट करना है, यू हैव टू गिव द अथॉरिटी ऑफ दैट एज वेल. हर चीज अगर आपके सुपरविजन के साथ होनी है तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दे सकते हो. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड. To get the work done from subordinates, one needs the authority. If I want to get the work done from my assistants, like take a simple example. मैंने अगर पेपर सेट करना है, मैंने OCM का पेपर कंडक्ट करना है चैप्टर 1 चैप्टर 4 पे, जो मेरी पहली टेस्ट होने वाली है. अब वो टेस्ट कंडक्ट करने के लिए मुझे पेपर सेट करना पड़ेगा. नाउ दैट पेपर व्हिच आई वांट टू गेट सेट, मैं ऑफिस में अगर सपोज विकास को कहता हूँ, विकास कहता है नहीं नहीं, यू डोंट हैव द अथॉरिटी टू टेल मी व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू. इफ दैट हैपेंस, then in that case will I be able to conduct my work in the reasonable way? Whereas in our office all the employees know it very categorically that if either of the co-founder is giving you any kind of instruction, that has to be followed ditto. Not even a single point change is to be done. Which means what? That all the co-founders of the academy have got 100% authority. Why? Because each of the co-founder is accepting 110% responsibility about their activities or not. If I am taking the course of OCM, I have taken 100% responsibility of that. Now, how do I finish it? What test I want to conduct? In what way I want to take that course? This all is my authority. Whereas if you go into the colleges, कॉलेज में टीचर को कहा जाता है, या स्कूल्स में चले जाओ, स्कूल में टीचर को कहा जाता है कि आपको 16 आवर्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म करना है, पर्टिकुलर सिलेबस खत्म करना है, और वो कैसे पढ़ाना है वो भी हम बताएंगे.
a person like me will never be able to work there. Why? Because I presume the authority along with the responsibility. I may be accepting the responsibility always, but with that, I take the authority impliedly. And that is what is expected. Authority comes with the responsibility. If the manager gets a target to be achieved, an authority should be given as to how to achieve it. Just now I gave you the same example. If I am supposed to conduct the OCM lectures, then how should I conduct that? In that case, no, it should be implied in all the cases, but in some situations it may so happen that the organization does not give the implied authorities. Therefore, though, there has to be the written authority as well, right? Like mujhe yaad hai, I was taking the lectures in BMCC. I was given the responsibility of completing the management accounting का सिलेबस. नो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं, तब मुझे DT इनकम टैक्स पढ़ाना था वहां पे. When this particular responsibility was given, they said that you have to finish the whole syllabus in 38 lectures. I said 38 lectures में तो ये complete करना किसी भी एंगल से possible नहीं है. They said, then how many lectures do you want? I said minimum 80 lectures will be required. They said this much is not available with us. Then I said, in that situation, if I want to complete, or if you are expecting me to complete it in 38 lectures, then you will not be required to tell me that what is to be covered and what is not to be. मैं जितना important होगा मैं complete करेगा. And I asked them for writing it and giving it to me in writing. Why? Later on, it should not have happened that you have not completed the syllabus, so we won't pay you the remuneration, etc. So authority in some cases is implied. In some cases, it is expressed. You have to take it in writing as well. Am I clear, Mr. Athar? Yes. The next point, that is the principle of discipline. This is the point where I am very weak from the perspective of getting the work done, from the perspective of guiding the assistants or the subordinates. You need to have a kind of system. You need to have a kind of process, and you need to follow that process. If one is not following the process, then that person should be given the proper penalty of that. If one is following the discipline, then that person should be appreciated for that. Because if you want to make a bigger organization, if you want to work with the larger organization for that purpose, my dear friends, the only thing that you can follow is discipline. And I'm factfully telling you that if you want to get the success, if you want to achieve something, then this is the only principle which can give you the correct guideline. So discipline is the most important thing in an organization. Why? Because the employees or everyone in the organization is expected to obey the rules set by the organization. It helps to achieve the goals. Yes, Padmanabh, absolutely correct. ADZ is very good in discipline, but he is overtly disciplined. In a sense, many a times it happens that some of the things have to be ignored, he doesn't. And that's, see, there has to be a proper matchup of that. मैं हमेशा कहता हूं, मैं मतलब whenever this kind of point comes, at that time people know it very well that if I have to go and talk to someone, I can go and comfortably talk to Manish Sardeja. Why I was having so much of traffic today, I must have talked to at least 50 people individually today. Why? Because people know that this person is not going to scold you beyond a particular point. और ये चिल्लाता भी है तो वो अपने आप खुद ही नरम कर देता है. So point is what? Why people get they have the fear of going to ADZ. The basic point is that he will give you a kind of guideline and you are expected to follow that. And that's where the difference comes. Both of us are giving you the similar kind of solutions. Both of us are giving you the similar kind of guidelines. But the point is what? I may give you the flexibility, he may not. But in an organization, you need the discipline. Flexibility to a certain extent.
Flexibility to a certain extent is correct, and discipline to 100% is wrong. So you need both the things hand in hand. You have to understand that what level should be maintained. Like if you take the example of studies, there has to be minimum 90% disciplined work. And when it comes to the management, you will be finding that 60 to 70% discipline also is accepted. But if you are into a manufacturing line, in that case, you need the perfection to the level of 99.99%. Because if you are not giving the correct result or correct output, then in that case, who will purchase it? Take a simple example. Suppose you have purchased a mobile of OnePlus, it has got quad camera and उसमें का एक camera काम नहीं कर रहा है. Will you be using that particular mobile? So in that case, you need 100% discipline, 100% perfection has to be there. Whereas when it comes to talking to the people, when it comes to the management of people, in that case, you can have the flexibility in that. So it all depends on the situation again, but you are expected to obey the rules set by the organization. It helps to achieve the goals. Flexibility in discipline with reference to the situation. Well, this is not written in the principle of discipline laid down by Mr. Fayal. Fayal says that you need to be 100% disciplined because Fayal has given it everything from the perspective of manufacturing. So good discipline results in the effective leadership. हाँ, मेरे एंगल से अगर सोचो आप, मैंने तुमको कहा that I am going to take 9:30 का session, I am going to take 9:30 का session. If I am not able to take that particular session, I am supposed to inform about that in advance. If there is any kind of situation, I am supposed to give you the notice in advance. If there is any change, if I'm going to now, yesterday I promised that we'll be doing writing practice, we'll be doing this, we'll be doing that. मैंने बहुत सारी बातें की कर. Now if I'm not following that, that means I'm missing out on principle of discipline. In that case, probably in the next time when I'll be saying something to you, you will not be accepting it. I'll give you a very simple example. On the other day, I was supposed to meet some students and I was supposed to reach there by 12:30 noon, 12:30 p.m. in the office. But due to certain work, I could reach there at 1:30. I messaged them at 12:30 that I'll not be able to arrive at the given time. I'll be able to come by 1:30. Now that was delayed, I know, but still I communicated that or not. So you need to follow that thing. You need to bring a kind of professionalism when it comes to your acts, right? So good discipline results in effective leadership. उससे क्या होता है कि people will start following you. People will start saying that yes, I have to follow his instruction. Now whether the students, it doesn't make any difference. Now ADZ will be giving you some kind of guideline, I am giving the guideline, so people come to me as well, people go to him also. So it is not the case that I am not disciplined at all. Please do not think from that perspective. Otherwise अचानक से तुमको लगने लगा यार मास्टर बड़ा कैजुअल है, right? Don't feel from that perspective. But still, because of those principles, because of the principle of discipline that has been followed, you get the basic discipline need to be followed at all levels. You'll be able to get the works at the right time and you'll be able to achieve your goals and targets with the help of that, right? Then the principle of unity of command, instead of, in fact, yesterday I had started talking about that when I was having the discussion. What is this principle of unity of command? That one person, one subordinate should be given the command or should be given the instruction by one person only. If four different persons will give different kind of instructions to a single person, that person will get confused. Principle of scalar chain is different and principle of unity of command is different. So unity of command says what? That one person should be led by individual. आप कहोगे सर आप एकत्वम में कैसे फॉलो करते हो, या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे दो एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स हैं, वहां पे कैसे होता है? There they know the priorities
and based on that priorities, the works are conducted and carried out by the organization, right? Every member to receive the orders only from one superior. Because if the Siddhi, you have a question? No, okay. Because if there will be the multiple superiors to a single person, that person will not be able to perform the activities given by any of them. And therefore, you would be finding in the IT industry, in the BPOs, there are some executives. Above that executives, there is this team lead. Above the multiple team leads, there is this manager. Above multiple managers, there is this senior manager. Why this kind of hierarchy that they are maintaining? The senior manager does not give instruction directly to the executive. Executive gets the instruction from his immediate superior only. Otherwise, that executive will bypass the superior and will go directly to the senior person or not. Therefore, it is said that there has to be a unity of command. Am I right? It helps resolving the disputes, managing conflicts and avoiding confusions. अब suppose मैंने मेरे स्टाफ को एक इंस्ट्रक्शन दी, उसी समय पे अभिषेक सर ने एक इंस्ट्रक्शन दी, उसी समय पे जीपी सर ने इंस्ट्रक्शन दी, एंड ऑल आर इंस्ट्रक्शंस वर कॉन्फ्लिक्टिंग. जनरली ऐसा नहीं होता है, बट ऑल आवर इंस्ट्रक्शंस वर कॉन्फ्लिक्टिंग. अब इससे हुआ यूं कि वो बंदा आता है मेरे पास, कहता है सर अभिषेक सर ने तो ऐसा बोला है. फिर मुझे एकदम गुस्सा आता है, यार हद हो गई, मैंने एक चीज का इंस्ट्रक्शन दिया है, वो कोई फॉलो नहीं कर रहा है और यहाँ पे अभिषेक सर चेंज किए जा रहे हैं मेरे इंस्ट्रक्शंस. फिर वो बंदा जीबी सर के पास जाता है, मनीष सर ने ऐसा बोला है. फिर जीबी सर मेरे से झगड़ा करते हैं. नॉर्मली वो जीबी सर से झगड़ा होने का कोई चांस ही नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है. तो पॉइंट इज व्हाट दैट टू अवॉइड द कंफ्यूजन यू नीड टू हैव द सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन गिविंग प्रोसेस. Orders from multiple superiors will confuse the subordinates. I said this earlier itself. And organizational hierarchy should be clearly defined. मतलब क्या? अब एक अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, एग्जीक्यूटिव, उसके ऊपर एक टीम लीड के ऊपर मैनेजर, मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के ऊपर बोर्ड. नाउ दिस इज द हायरार्की स्टेप्स इन द फंक्शनिंग. कोई भी काम अगर करवाना है तो अब रतन टाटा डजंट गो टू द फ्लोर मैनेजर एंड टेल हिम कि मेरे को एक नया टाटा नैनो बना के दो, राइट? या फिर सपोज रतन मुकेश भाई को लगता है कि यार मेरे घर में वो डीजल खत्म हो रहा है, तो ही डजंट गो टू दैट पेट्रोल पंप वाला पर्सन कि यार मेरे घर पे एक 50 लीटर डीजल भिजवा देना, वो खत्म हो गया, जनरेटर नहीं चलेगा. फिर he gives the orders to his subordinate further processes that particular information, right? टाटा जगवार नहीं लेगा रे. टाटा, तुमको मालूम है, he is a person who lives with the 100% simplicity. वो बंदा अपनी मतलब, हाँ ऑफ कोर्स ही विल बी यूजिंग अ बेटर व्हीकल, नो डाउट अबाउट इट. मैंने नैनो का एक एग्जांपल बताया, बट ही इज अ पर्सन हु लिव्स विद द सिंप्लिसिटी. ही डजंट लाइक टू हैव अ लैविश लाइफ. एंड दैट्स द फैक्ट. यू रीड अबाउट टाटा, मिस्टर रतन टाटा. हाँ, मिस्टर जमशेदजी टाटा was a kind of person who was always a kind of yes, I know Mr. Jay Jare that वो जगवार उन्हीं का ब्रांड है. आई नो दिस. थोड़ा थोड़ा मैं भी पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर. वेल एनीवेज, तो Mr. Jamshedji Tata was said to be a very professional person. He would be a flamboyant fellow. But Ratan Tata is said to be a very humble person as compared to Jamshedji Tata. Well, anyways. अरे हाँ बाबा, तू अब मन पे लेता है. मैं तो मतलब सामने कमेंट सुनता हूँ, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, या देखता हूँ और मैं रिप्लाई कर देता हूँ. सो डोंट थिंक फ्रॉम द अदरवाइज perspective. Then unity of direction. Now this is exactly opposite of unity of command.
Of course, it is in synchronization with unity of command only. There should be one head and one plan. क्यों? अब मल्टीपल लोग एक ही एक्टिविटी करेंगे. अब सिंपल से एग्जांपल बताता हूं. आज हमारा डिसीजन हुआ दैट वी हैव टू स्टार्ट विद द रिवीजन बैच. फॉर व्हाट? फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन देयर सीए फाउंडेशन एग्जाम. तो अब मेरे मन में था कि दैट बैच शुड स्टार्ट. देयर एसएम सर वाज थिंकिंग कि लॉ के लिए जनरली लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता है, इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तो पीपल जॉइन इट फॉर अकाउंट्स एंड मैथ्स, यू गो अहेड. So when we started talking about, at that time we started evolving on a plan, and once we evolved onto the plan, then and only then the instruction went to the staff. Otherwise क्या होता, मुझे किसी ने फोन किया, सपोज स्टाफ मेंबर में से किसी ने, सर आपण रिवीजन बैच घेणार आहोत का? मैंने कहा हाँ आपण घेणार आहोत. फिर उन्होंने एसएम सर को फोन किया, सर तुम्ही रिवीजन बैच घेणार का? अब शब्द बदल गया, बट सर तुम्ही रिवीजन बैच घेणार का? एसएम सर बोल्ड एंड एलिगेंट, नो. अब एसएम सर ने ना बोल दी, मैंने हाँ बोला, सामने वाला बंदा कंफ्यूज्ड. स्टूडेंट सामने आया, ओ नहीं पण होऊ शकत. सो देयर विल बी द कंफ्यूजन और नॉट. देयर हैज टू बी वन हेड एंड वन प्लान. Each group should work on the same objectives. अब हम 5 में मिल के जब काम करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है, that we should give the best to our students. Whomsoever is coming should be getting the same kind of service, should be getting the quality service. There should not be any kind of lacuna in what we have been doing. हर किसी का एक ही मोटो होता है that when we are carrying out the activity, we have to carry it out from the fundamental point of view. That is a single plan on which we work. And each group should be directed by a single person and use that single plan. Now, for us, direction means what? The group itself directs us. And we as a group direct our subordinate. In the larger organization, if you take the example, if there is a kind of hierarchy being maintained, now, वो team lead जो मैंने कहा आपको, वो टीम लीडर जो होता है वही सारे डिसीजंस लेता है उस ग्रुप के लिए. उसको अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो ही विल कंसल्ट हिज सुपीरियर एंड देन विल गिव द इंस्ट्रक्शन टू हिज सबऑर्डिनेट्स, हु इज वर्किंग एज अ काइंड ऑफ लिंक बिटवीन द सीनियर्स एंड द जूनियर्स, सो दैट all the members of that group are working on the same thing. Otherwise क्या होगा? Just observe it. There is a production department, there is a sales department, there is a marketing department, there is a department for carrying out the PR activities, there is finance department in an organization, and there is an HR department. क्या क्या कहा मैंने? Production, sales, marketing, HR, PR, finance. 6 अलग अलग डिपार्टमेंट एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. प्रोडक्शन वाले बंदे का काम क्या है कि उसके पास जितना रॉ मटेरियल पड़ा है वो पूरा खपा के प्रोड्यूस कर दो गुड्स. पीआर इज पर्सनल रिलेशंस, जो इमेज बिल्डिंग होती है आजकल, ब्रांड बिल्डिंग जो होती है ना. मार्केटिंग वाले प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं और पीआर वाले ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं, राइट? तो नो फॉरगेट अबाउट दैट पीआर डिपार्टमेंट, चलो जाने दो. हम लोग जो कॉमन, जो हमारी आम जिंदगी में जो हमको पता है, हम उन पे फोकस करते हैं. तो प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, एचआर है, मार्केटिंग है और सेल्स है. सेल्स एंड मार्केटिंग आर द इंडिपेंडेंट फंक्शंस फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. क्योंकि सेल्स वालों का काम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने का कभी नहीं होता है. सेल्स वालों का काम जितना ऑर्डर आया उसको डिस्पैच करो, प्रॉपर सामने वाले के बंदे के पास पहुंचा है या नहीं, कौन से ट्रांसपोर्ट से गया है, ये सारा काम सेल्स डिपार्टमेंट का होता है. ओके, तो आप सपोज मार्केटिंग वाले बंदों ने इतनी खतरनाक मार्केटिंग कर दी मार्केट में कि प्रोडक्ट के लिए ह्यूज डिमांड हैज कम, और प्रोडक्शन वालों ने प्रोडक्ट बनाया ही नहीं. क्या होगा रे? व्हाट वाज द यूज ऑफ दैट एक्सपेंडिचर व्हिच इज डन ऑन मार्केटिंग? सेल्स वाले बंदे रूम में बैठ के बू कर रहे. क्यों? ऑर्डर बहुत है, हमारे पास गुड्स ही नहीं, हम सप्लाई क्या करें.
प्रोडक्शन वाले बंदे को पूछा भाई क्यों नहीं प्रोड्यूस किया? यार रॉ मटेरियल ही नहीं खरीदा तुमने। भाई क्यों नहीं खरीदा? पैसा ही नहीं दिया हमको। भाई पैसा क्यों नहीं दिया? पैसा था ही नहीं। और तो फाइनेंस वालों कहते, फाइनेंस वाला कहता है मुझे किसी ने बताया नहीं आपने इतना मार्केटिंग करना है। सो व्हाट हैपेंड? They all have not worked on the common plan. Had there been a common plan being decided that this year we will be trying to reach to the turnover of 500 crore rupees. ये board of directors ने decide किया. What is the turnover that they have targeted? 500 crore, 500 खोखा. 500 खोखा डिवाइड बाय 12 मतलब 40 खोखा पर मंथ. 40 खोखा पर मंथ सेल करने के लिए 40 खोखा का प्रोडक्शन होना जरूरी है. 40 खोखा का प्रोडक्शन के लिए कम से कम 20 खोखा पैसे की जरूरत है. 20 खोखा पैसा लाने के लिए बैंक के सामने भीख मांगना पड़ेगा. वो फाइनेंस वाला कर लेगा. प्रोडक्शन वाला बंदा कहता है तुम रॉ मटेरियल लाओ देखो कैसा प्रोड्यूस करता है. सेल्स वाला बंदा कहता है तुम सिर्फ पैक करके दो देखो कैसे भेजता है. और इस टाइम पे अगर मार्केटिंग वाले ने काम नहीं किया तो सब कुछ तैयार है, प्रोडक्ट मार्केट ही नहीं हुआ, प्रोडक्ट बन के पड़ा है गोडाउन में. So those all are expected to work on that common plan. And that plan should be attached. That plan should be informed to all the related departments. And that's why it is said that there has to be a one plan. Did you people understand that? I hope I'm going fine for everyone. नहीं तो क्या होगा ना कि यहां से सुनते सुनते वहां बैठे बैठे सो गए. Right? Well, why I said that it is contra to unity of command. Unity of command में हमने क्या कहा था? एक बंदा डिपार्टमेंट को लीड करेगा. बट यहां पे वो एक बंदे को जितना प्लान मिला उसके हिसाब से सारा लीड करेगा या नहीं. And that's why I said that it is contrary. Subordination of individual interest over the organizational interest. कंपनी पहले बाद में मैं. और हम लोग क्या करते हैं? पहला मैं बाद में कंपनी. मेरे पास एम्प्लॉय आता है, मैं 10:15 दुकान पे पहुंच जाता हूँ, वो 10:30 बजे आता है. उसको पूछा भाई 10:30 बजे क्यों आया? सर वो रास्ते में ना मेरा पैर दुख गया था. सर वो सिचुएशन हो गई थी. रोज देयर इज द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन. Understand why it happens is because they give the organization as secondary level. If I have been appointed as an employee somewhere, it is my organization. I'll give the priority to that. I'll tell you seriously, today there was an activity that I was supposed to complete on my personal level. मेरा पर्सनल कुछ काम था, किसी कंसल्टेंट के पास जाना था. But because I had the students coming in from 12:30, I couldn't move out of the office. नीचे दबे तक नहीं जा पाया. 12:30 to 8 o'clock, I was just moving around from one cabin to another cabin to another. That was the situation for me. And I ignored what work I was supposed to complete. I called that consultant, told him, sir, today there was a flow of the students. I couldn't come today. Shall I come tomorrow early in the morning at 9 o'clock so that I'll finish that and then I'll be able to go to the office? He said, yes, that's good. Good for him, good from him. But what I'm doing here is I am keeping my organization above my personal interest. That is what you call as subordination of your individual interest over the organizational interest. I'm not asking for the emergent situations. I'm asking when there is an option, whether my personal work or my office work, I should be giving the priority to my office work if there is an option.
If there is no alternate, I have to finish this particular thing, so I have to. But when there is an option, I should always give the priority to my organization. क्यों? अगर ये नहीं होगा, you want to grow, but unless and until organization grows, how will you be growing? Your growth is dependent on organizational growth, and organization's growth is dependent on your growth. That's how it goes. So individual interest should have less importance to the organizational interest. The manager is expected to take the decisions considering everyone's interest. इससे मेरा क्या फायदा, ये सोचने वाला अगर बंदा होगा, लाइक इफ आई हैव टू सेट अ टाइम टेबल, इफ आई थिंक कि यार मुझे मेरे कंफर्ट के हिसाब से टाइम मिलना चाहिए, बाकी सब जाए भाड़ में, आई कैन नॉट डू दैट. When I am setting out the timetable, I have to consider the requirements of each and every person associated with me. I have to give them all the options wherever those are possible. I have to take care of the group, not of me alone. And employee should protect the interest of the organization over his personal interest. Now, कई बार क्या होता है, एक सपोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक कोई वेंडर आया, कहता है सर आप हमारा प्रोडक्ट्स परचेज करो, वी विल गिव यू 5% एज कमीशन. बंदा खुश हो जाता है, यार पैसा ही पैसा होगा, but that particular product is a bit inferior than what you have been buying today. अब अगर आपने इंफेरियर वाला प्रोडक्ट खरीद लिया, उससे जो फिनिश गुड्स बने वो भी इंफेरियर होंगे, उससे सेल्स कम होगा, आपने खुद के 5% कमीशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन का 50% का नुकसान करवा दिया ना. Why? Because you didn't give the importance to the organization, you gave the importance to yourself. Whereas अगर मैंने उसको कहा होता, या फिर जो भी बंदा होता है, उसको सपोज वो मैनेजर ने कहा नहीं भाई ये सब कुछ नहीं चलेगा, मेरे को क्वालिटी दे, क्वालिटी के साथ 5% देता रहेगा, मेरे को चलेगा. Then in that case you are giving the priority to the organization. Of course वो 5% नहीं लेने चाहिए, वो गलत है. That is unethical. I am not teaching you that. But अगर ऑप्शन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी टू whom? To the organization. और उसके बाद वो जो 5% दे रहा है ना, उसको बोलते हैं यार तो एक काम कर दो, 5% मेरे को देने वाला है ना, ऑर्गेनाइजेशन को डिडक्ट करके दे दे, बात खत्म. तो आपका एथिक्स भी मैनेज हो गया. यस ऑफ कोर्स इट इज अ ब्राइब. आपका ऑर्गेनाइजेशन भी टेक केयर हो गया और आपको वो क्वालिटी भी मिल गई, रेट भी कम हो गया, बिकॉज you kept on priority as your organization over and above yourself. When you keep yourself below the organization when you are taking the decisions, in that case it will always be a helpful situation for the organization. In such case the organization will grow along with your growth. I hope you got this point right. The next point, that is the principle of centralization. Actually, yesterday I was teaching this departmental organizations in the 11th standard OCM. I hope you also remember that. 11th standard OCM में कहीं गलती से पढ़ा होगा तुमने. The forms of business organization part 2 में departmental organizations, statutory corporations और क्या था रे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. हाँ सर, हमने अब तक के एग्जाम ही नहीं दी ना वो 11th स्टैंडर्ड की, तो हमको पता ही नहीं चला हमने क्या पढ़ा था. हमें तो उन्होंने पुश कर दिया सिर्फ, और मतलब हम तो मतलब ढकल पास मत बोलो यार, कोरोना पास बोलो. सर वी हैड गॉट द स्पेशल पास दैट वाज कॉल्ड एज कोरोना पास. चेन स्टोर्स और वो सब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, रिटेल स्मॉल स्केल. चैप्टर 2 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री.
सर यहाँ कल क्या खाया था वो याद नहीं रहता है, आप पिछले साल वाले सवाल पूछ रहे हो, हद हो गई। वेल एनीवेज अच्छा, हमारी सुई चैप्टर 1 पे ही अटक गई, बाप रे। यू वर नॉट देयर इन ओसीएम लास्ट ईयर, राइट? इवन इन दिस ईयर। वेल एनीवेज, हाँ गवर्नमेंट कंपनी भी था। अभी तू चैप्टर मेरे को ढूंढ ढूंढ के बता। मेरे पास है भाई, मेरे पास है, डोंट वरी। ओके ओके, सही है, जाने दो। नाउ व्हाई आई सेड दिस इज, in the departmental organization, one of the demerit is that they have got the 100% centralization. And that's what this principle of management talks about, that you should not, I repeat, one should not have the 100% centralization of the activities. There has to be a reasonable balance of centralization and the decentralization. What do I mean by centralization? When you have kept the power at a particular point and it is not been given to the subordinates, then in that case it is called as centralization. Like हमारे घर में हमारे सारे डिसीजन हमारी मम्मी लेती है, if that's the situation, it is 100% centralization. कि मैंने आज खाने में क्या खाना है से लेके मैंने आज कपड़े क्या पहनना है तक, if the decisions are taken by mama, it is 100% centralization. Many of you have been rebellion for n number of times at home, I know about it, but that has not worked for you at all, क्योंकि अल्टीमेटली रात में और दिन में हमको खाना खाना है और इन दोनों टाइम के बीच में हमें नाश्ता भी खाना है, राइट? दिस इज नॉट मोनोपोली बेटा, दिस इज डिक्टेटरशिप, बट दैट इज एन loved dictatorship, that is accepted dictatorship. Well, so point is what, that there is an I hope you have the Hitler शायद नहीं बोलने का, I hope you have understood the concept of centralization. What is centralization, right? Well, आप बोलोगे कि मास्टर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देता है कि हम लोग मतलब ये जिंदगी में कभी वापस भूलेंगे या नहीं पता नहीं। भूल जाओगे तुम 12th के बाद भूल जाओगे, डोंट वरी। फ्लाइंग बेलन सार्थक तूने बहुत खाए हुए दिख रहे हैं। So centralization basically indicates what? Centralization says that there are certain things which should be kept in the center of the organization, whereas there are so many things which should be delegated to the subordinate authorities. So there has to be a proper balance between centralization and decentralization. So centralization means the concentration of power and authorities. अब मैं कई बार ये एग्जांपल देता हूं कि अगर आप एग्जांपल लो एयरटेल का, एयरटेल by that way is one of the topmost telecom company in our country, which was started by Mr. Sunil Bharti Mittal. अब सुनील भारती मित्तल ने सारे डिसीजन, नहीं मैं डिसीजन लेगा, मैं बोलेगा तो ही तुम काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. That would have been the case. Airtel would not have become Airtel. I'm seriously telling you. ये नाम कैसे आया पता है तुमको? एयरटेल. इनफैक्ट शुरुआत थी बीटेल और उसके बाद में आया एयरटेल. बीटेल क्यों? They had developed a landline phone which was having the shape of a B, and from there they got B telecommunication. और बाद में जब उनको मोबाइल कम्युनिकेशन का लाइसेंस मिला तो यू आर टॉकिंग थ्रू एयर, देयरफॉर इट इज एयरटेल, राइट? सो फ्रॉम देयर दिस कंसेप्ट स्टार्टेड. वेल एनीवेज, ये बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी, आप पढ़ते लिखते समझ में आ जाती हैं आपको.
This applies to more. This applies more to small and some middle organizations, because in the small organization now, like I keep on giving the example that my wife runs a shop. Now, in her shop, she will surely be having the control of everything, because that organization is not that big. It's not Reliance Smart, or it's not Reliance Trend, that where you can delegate the authority. Still, she delegates, but in the small and middle organizations, you have to keep the power control with yourself. This principle lays that there must be a proper balance. Very important line this is, and that must form part of your answer. There must be a proper balance between the centralization and decentralization. In the larger organization, this is not possible. मैं जो सुनील भारती मित्तल के एग्जांपल दे रहा था, सुनील भारती मित्तल cannot keep every control with himself. So what they do, all the strategic decisions will be taken by the board of directors. All the executive decisions will be taken by the executive members. And then the things pass on to the subordinate authorities. And there is a decentralization. So Sunil Bharti Mittal har jagah jaake ungli nahi karta aajkal. He does the ungli only where there is a strategic decision to be taken. Principle of fair remuneration. जो बंदा मेरे पास काम कर रहा है उसको मैंने जितना कमिट कर किया हुआ है उतना उसको प्रॉपर पैसा टाइम पे मिलना चाहिए. You should not exploit your employees. You should be paying at par the market rates. You should be paying the reasonable remunerations, and that remuneration should be paid at the right time. If there is a possibility, you should incentivize the employees also. So to keep the employees financially satisfied and retain him for long span reasonable remuneration, I am categorically using the term as reasonable. Why? Less remuneration doesn't work. I would say if less remuneration is bad, then excessive remuneration is worst. You are therefore supposed to pay the reasonable remuneration. क्योंकि आप जब ज्यादा पैसा देना चालू कर देते हो तो आप शायद उस एम्प्लॉय को रिटेन कर लोगे, but that will become more like a liability to your organization as compared to your asset. And therefore there has to be the reasonable remuneration being paid. The fair remuneration affects the productivity and efficiency level. अगर आप उस एम्प्लॉय को उसके काम के हिसाब से पैसा देते रहोगे तो your employees will be giving you the good productivity and efficiency also. Remuneration should be decided considering the employee's expertise as well as skill set, right? So that's what is the principle of fair remuneration. Scalar chain, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन कैसे मूव होनी चाहिए. From bottom to top, it should not jump. It should come through hierarchy. From top to bottom, it should not jump. It should come through the hierarchy. And that's what is the principle of scalar chain. It means a person working at certain level in a department, his remuneration should be same as to another person in other department. You can say this, but still within the same department, two different persons at the same level may get the different remuneration. Why? Because the two different persons may have the different capacities. Two different persons may have the different expertise. Two different persons may have the different experience. Two different persons may have the different skill set, right? So based on that, the remuneration is decided, not based on the position only. Position decides the base remuneration. Any differentiation is decided based on the skill set, knowledge, experience, expertise, and the capacities, right? It means a link of authority for communication from top level to bottom level. अगर मुकेश भाई फ्लोर पे जाके डायरेक्टली बोले कल से तुमको छुट्टी, that doesn't sound good. Mukesh Bhai tells his assistant, assistant tells the secretary, secretary tells the manager, manager tells the further authority, and
Like that, if moves on, it suits the organization, because if there will be the jumping information, then there will be the conspiracies, and that should not be the case. पहले ही ऑफिसेज में पॉलिटिक्स इतना होता है कि अगर आप स्कैलर चेन फॉलो नहीं करोगे तो पॉलिटिक्स को आप सपोर्ट कर रहे हो, राइट? It ensures the orderly flow of information and communication, and large organizations also follow the concept of gangplank. Now, what is this gangplank? कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको सडनली सब में पहुंचानी होती है. You cannot pass on the information step by step, step by step, step by step. Like, लॉकडाउन लगा, कल से ऑफिस बंद. For this, Delhi office will issue the circular, then it will come to Mumbai office will issue to the Pune office will issue to the Baramati office will issue to the subordinates. This will take time. Instead of that, if they send the information or shoot the message on WhatsApp or the Telegram, whatsoever groups that they are maintaining with, then in that case, it will be posted fast. That is what we call as the concept of gangplank, right? Then principle of order, a place for everything and everything in a place. ये हम लोग घर में रोज एक्सपीरियंस किया करते हैं. कहाँ गए वो सारे फ्लाइंग चप्पल, फ्लाइंग बेलन वाले? They would be having the short experience of this. मतलब हाँ, व्हाट्सएप प्लैंक हुआ बराबर जय. मतलब ये कि हाँ, कैसे इमीडिएटली एग्जांपल दिमाग में आ गया. स्वीपिंग ऑल द मेस इनटू द रग, बेड पे टॉवेल रखना, और क्या क्या नहीं करते हो तुम. तो ये सब क्यों होता है पता है? माँ ने कहा मुझे रूम एकदम साफ सुथरा दिखना चाहिए. एब्सोल्युटली विद इन नो टाइम इट विल बी डन. तुम लोग जब स्कूल से कॉलेजेस से आया करते थे, चप्पल एक एक जगह पे फेंक रहे हैं, दूसरा दूसरी जगह पे फेंक रहे हैं, फिर सॉक्स निकाल के फेंक रहे हैं. एंड अभी तो साल भर लॉकडाउन था, अब वापस स्टार्ट हो जाएगा. कहां से स्टार्ट होता है पता है? मान लो तुमने फ्रिज में से पानी का बोतल निकाला, गर्मी आने वाली है, फ्रिज में से पानी का बोतल निकाला, पानी पी लिया ठंडा, और वापस भर के रखना भूल गए. भूल क्या गए? तुम कैजुअल हो, तुम लापरवाह हो, तुमने छोड़ दिया, इग्नोर किया, वही बॉटल पीते पीते वही बॉटल फेंक के निकल गए तुम. शाम को माँ ने कहा बेटा वो फ्रिज में मैंने बॉटल रखी थी वो निकाल के देना. यू गो एंड सर्च, माँ बॉटल किधर रखी है? तुमको तो शाम तक के याद भी नहीं होता है कि वो तुम पी गए. माँ कहाँ रखी है बॉटल? अरे वहां वो देख थर्ड वाले रैक में, वहां पे सेकंड वाली बॉटल जो है ना, वो वाली पानी की. नहीं नहीं, वहां तो कोई बॉटल नहीं रखी हुई है. माँ को बराबर दिमाग होता है. एवरीथिंग हैज अ प्लेस, राइट? फिर माँ कहती है तू सुबह तूने ही निकाली थी ना ठंडे पानी की बॉटल. हाँ वो तो मैं पी गया. फिर वापस कौन रखेगा? और उसके बाद जो स्टार्ट होता है, मुझे मालूम है कि तुम्हारा तो ध्यान कहीं होता ही नहीं है, तुम कहीं ध्यान देते ही नहीं हो. कब तुम जिम्मेदार बनोगे, कैसा तुम्हारा काम होगा, तुम तो ध्यान भी नहीं देते हो. तुम तो पूरा दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, फौजी, व्हाट्सएप, अमंग अस वगैरह वगैरह खेलते रहते हो. फिर तो तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ दिन भर बात करते हो, खत्म. अरे भाई ये पानी की बोतल मेरी गर्लफ्रेंड तक कहाँ पहुंच गई? आने दो तुम्हारे पापा को, फिर मैं बात करती हूँ. अब तो तुम्हारा मोबाइल मैं छिनवा के ही रहूंगी. एंड खत्म. मतलब ये, you have to remember this principle of order. Why? Because a place is there for everything and everything has to be in that place, right? आपको कैसे पता चला? अरे मिस्टर आशुतोष मुंद्रा, मैं भी किसी का पापा हूं, मेरी वाइफ भी किसी की मम्मी है, राइट? वेल, वो बंदा पानी पीना नहीं छोड़ता है, वो अगले दिन पे वापस वैसे ही बिहेव करता है. दैट्स क्वाइट नॉर्मल. लेट इट बी.
तो मैं कहना क्या चाहता था वो समझो यार, तुम कहां पानी में अटक गए. So what you are supposed to do is you are supposed to follow this system. इससे क्या होगा पता है, इसका बेनिफिट क्या है. मान लो there is this organization which is having the assembly line. That assembly line works on the basis of what? Do you know that? एक hook होता है. That hook picks up the particular part of that particular product which is to be made. Maybe a machine, maybe a kind of vehicle, anything. वो पिक करता है, फिर उसको पार्ट्स अटैच करते 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 वो अल्टीमेटली दूसरे पॉइंट से फिनिश प्रोडक्ट बाहर निकलता है. नाउ अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, अब सपोज उस फ्रेम को आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐड करना है, कोई प्रोडक्ट अटैच करना है, और वो प्रोडक्ट उस जगह पे नहीं है जहां असेंबली लाइन खड़ी है, वो किसी और जगह पे है. वो जाके असेंबली लाइन वहां से वो प्रोडक्ट उठा के चिपकवा के आती है, फिर वापस अगली प्लेस पे आती है, फिर घूमने जाती है, फिर घूम के आती है. इफ दिस विल कीप हैपनिंग, आई होप यू पीपल आर लुकिंग एट मी ऑल्सो. आप लोग सिर्फ पीपीटी की तरफ नहीं देख रहे हो. हाँ, मतलब वो तुमको एक्शन समझ में आएगी. एंड इफ दिस इज गोइंग टू हैपन एवरी टाइम, then in that case your assembly will be taking a lot of time to work or not. Instead of that, if you have pre-designed your whole of the assembly line and everything is moving in the expected sequence and all the required material is kept at the required place, then automatically you'll be able to make more products. You'll be able to make more efficiently the products with the better quality or not. Therefore, you are expected to follow the principle of order. All resources should be at right place at the right time. And ये क्यों पता है? अब तुम पढ़ाई करने बैठे, अभी तुम लिखने बैठे, जैसे मैंने कहा राइट डाउन, सबसे पहले पेन ढूंढ, पेन था, पेन सर पेन दो, तुम्हारे जेब में दिख रहा है सर, ये लो ये लो. दिस इज व्हाट हैपन, ये लो, दिस इज व्हाट हैपेंस. हम लोग पेन ढूंढते हैं, फिर पेंसिल ढूंढते हैं, फिर मेरा इरेजर नहीं मिल रहा है, फिर मेरा वो डिवाइडर, वो स्पेशली तो स्कूल में जब हम लोग ज्योमेट्री का पेपर होता था, हमारा मैथ्स का पेपर है, और उस दिन हम लोग वो डिवाइडर जो होता है ना, जो वो राउंडर होता है, राउंडर डिवाइडर, वो ढूंढ रहे होते हैं कि यार कहाँ रख दिया, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, जाने तो नया लेके आते हैं. So your resources are not utilized in a proper manner. It allows the proper utilization of physical and human resources when you are following the principle of order. I am absolutely hopeful that I am going good for everyone. I am taking more than the required time on these all principles. इनफैक्ट मुझे दोनों के प्रिंसिपल्स, फयाल साहब के और टेलर साहब के दोनों के प्रिंसिपल्स खत्म करने थे, बट मुझे नहीं लगता है कि हम लोग टेलर तक के पहुंच पाएंगे. तो हमको कपड़े अब कल ही सिलवाने पड़ेंगे, कल नहीं परसों, राइट. पीपीटीज बेटा मैंने कहा था आशुतोष, आई विल बी शेयरिंग दीज ऑल एट द एंड ऑफ द सेशंस, राइट. ओके, नहीं बेटा नहीं कर सकता एक्सटेंड. द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सर्वधर्म समभाव. मेरे लिए मेरे साथ काम करने वाले सारे व्यक्तियों की वैल्यू एक जैसी है. I am not going to discriminate amongst the people. मेरे पास अगर 4 स्टूडेंट्स आते हैं, कई बार मेरे पास बंदे आते हैं, सर थोड़ा डिस्काउंट दे दो ना. मैं उनको सिंपली कहता हूं that when I'll be sitting in my classroom, at that time will I be teaching your child a point lesser than as compared to what others will be learning? मैं तुम्हारे बच्चे को डिस्काउंट दूं, does that mean कि मैं दूसरों के साथ अनफेयर हो जाऊं? बिकॉज उनसे मैं पूरा 50,000 रुपया फीस लेगा और तुमसे मैं 55,000, सॉरी 45,000 रुपया फीस लेगा प्लस जीएसटी. मोदी जी तो अलग बैठे ही है वैसे भी. तो 5,000 का तुमको जो डिस्काउंट दिया, तुम्हारे बच्चे को क्या 10% में कम पड़ाएगा? दिस इज नॉर्मल स्टेटमेंट दैट आई डू. व्हाई? बिकॉज फॉर मी द स्टूडेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी आर सेम. हु हैज पेड व्हाट फी इज इररिलेवेंट फॉर मी, isn't it? And इसीलिए मैं सबसे सेम तरह का फी लेता है. So same case applies to the management. When management is giving the instruction to the employees,
When management is providing the information to the employees, they should treat all the employees at the same level. Same level मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोग को सेम लेवल, नहीं तो तुम बोलोगे सर वो जो टॉप मैनेजर है और जो फ्लोर मैन है उन दोनों को सेम लेवल. नो, नॉट लाइक दैट. But the particular hierarchy or particular category should be treated same. There should be no discrimination while allotting the work or deciding remuneration based on capacities, based on their expertise, based on their experience. The remuneration should be decided. Their work level should be decided. And employees' wages should be based on expertise, knowledge, and the level at which he is working. अगर अब ये मेरे साथ हुआ था, मैंने शायद जब पहले पढ़ा रहा था तब शायद ये एग्जाम्पल बताया भी था. मैं जिंदगी में, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने एक ही साल जॉब की है, वर्कड एज एन एम्प्लॉय. Otherwise, I have always been working as a kind of professional. तो हुआ यूं, मिडकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ज्वाइन हुआ था और वहां पे आई वाज अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. 3 कैटेगरीज होती थी, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर. और नीचे एक और क्लर्क वगैरह लेवल की कैटेगरी होती थी. आई वाज इन द 3rd लेवल. अब जब मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर करके अपॉइंट किया गया तो नॉर्मली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रेम्यूनरेशन होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 40,000. और मैंने इनके साथ में निगोशिएशन किया. मैंने कहा इतने में तो मैं काम करने वाला हूं नहीं, मुझे कम से कम 50,000 रुपए चाहिए. तो दे अग्रीड अपॉन 50,000. In the same department in which I was appointed, in that same department, there was this person who was working with them for last 2 years. He was getting 42,000. I started getting at 50,000 and he was having 100% khunnas with me. You are getting 50 and I am getting 42. That kind of khunnas he had. Why? I was a chartered accountant. I was having the practice experience of 9 years at that time. And because of that, the company gave me the additional remuneration. Whereas this person was not having any kind of experience of that level. He is not a chartered accountant even today. He's a doctor now. So the point is what? I was having much better expertise and the skill set as compared to him. And that's why I was paid 50,000 and he was paid 40,000 or 42,000 rupees. Within 1 year, I worked there from 8th of March of 2010 to 8th of March 2011. एक साल के लिए exact काम किया मैंने वहां पे. And within that 1 year, I got 3 increments. When I left that organization, my remuneration was 59,000 rupees without asking once. एक बार भी मैं उनसे increment मांगने नहीं गया. Still, I left at 59,000 in 1 year. 20% का growth. Now, why? Why they would pay me more? Because I was showing that kind of efficiency. Why the other persons at the same level in the same department were not getting the increments was their expertise, their provision of services. Because I was working in that organization as if this is my own organization and that is what is expected. Why did I leave practice? Because I liked more in teaching. It avoids the conflicts in the organization. तो मेरे साथ तो वहां उस organization में लगभग 4 या 5 लोगों की खुन्नस थी. When I left that organization, I joined Zavres at that time. Pariah Mulk for us now. At that time, मुझे इस कंडीशन पे छोड़ा गया कि you will be finishing up with semester 3. तो semester 3 के मैं लेक्चर लेने गया. हफ्ते में 6 लेक्चर होते थे मेरे वहां पे. So I met with one of the senior faculty there. She used to get the weekly lectures of 4 हफ्ते में. और मैं जब इधर ज्वाइन किया प्रोफेशनल कोचिंग में, तो here my daily lectures were around 6 to 7. So I went there और इन्होंने कहा हाँ बहुत सारा ऑफिस पॉलिटिक्स हुआ था. मुझे तो बहुत मजा आया था. तो मैं जब गया वहां पे लेक्चर लेने के लिए, तो there I met with this fellow, this lady in fact, and she asked me, Manish, how is everything going? I said, going very good, ma'am. There is no problem. Okay, how many lectures do you take? I said around 6 to 7. She said only 6 to 7 in a week. I said no, ma'am. It's 6 to 7 per day, and she was under a deep shock. 7 lectures per hour into 6 days, that is 42 hours. I'm taking 4 only. And at that time, she was ultra senior to me. Her remuneration in that organization and my remuneration in here was same.
and she was under ultra shock. क्यों? एक तो पैसा भी उस उनके लेवल का. She was, I was at that time, मेरी एज थी 30, no 28 when I was working in Midcon 2010. नहीं, 29 was my age at that time, and she was 62 when she was working there. She was getting 80,000, and at the age of 30, I started getting the same remuneration. And she was under a deep shock because of that. यार मुझे 30 साल लग गया यहाँ तक पहुंचने के लिए, तू 30 साल में यहाँ पे पहुंच गया. So this happens. And why this happens is because, so you cannot ask for the principle of equity. मतलब सबको सेम ही मिलेगा, कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी एक्सपर्टीज हो, कितना भी नॉलेज हो, कितना भी स्किल सेट हो. Your skill set will change it, right? So principle of equity says based on what you get, you are expected to give. Then stability of tenure. हमेशा अगर मेरे ऊपर लटकती हुई तलवार रहेगी, तू काम ठीक से कर, नहीं तो मैं कल तेरे को निकाल देगा. If this is the kind of thing, that person will not be able to work efficiently with you at all. So there has to be a stability of tenure. That हाँ, उसको ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए मैं कुछ भी करेगा मैं इनका जवाई है. But at the same time ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैंने थोड़ी सी भी गलती की तो मेरे को निकाल देंगे. So there has to be some assurance that if the person is doing the right things at the right time in the right situation, then that person has no problem. That person will be able to continue. Employees should be assured the stability of their tenure. It creates the sense of belongingness कि वो बंदा जब आपके साथ काम करेगा तो automatically, yes, this is expectation for equity. That person will be continuing with the work, continuing the work with you, and insecurity of job reduces the efficiency. ये मुझे पता है यार, कल को मैंने अगर छोटी सी भी गलती की तो ये बंदे मेरे को निकाल देंगे, तो वो बंदा कभी ठीक से काम कर ही नहीं पाएगा, हमेशा डर डर के काम करेगा. And that should not be the case. You should always appreciate the initiatives coming from your employees, because if अगर किसी के initiatives को तुम दबा दोगे तो that person will never be bringing the good things to you. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी हुई है वो अपने एम्प्लॉइज को हमेशा इंसेंटिवाइज करती रही है टू गिव द इनिशिएटिव्स, टू प्रोवाइड समथिंग न्यू, एंड बेस्ड ऑन दैट दे हैव ग्रोन. लाइक टेक फॉर अ वेरी सिंपल एग्जांपल, टाटा मोटर्स had kept their one of the vehicle in the name of their executive engineer named Mr. Sumant Mulgaonkar. The vehicle name you must have realized now is Sumo. टाटा सुमो, ये जो गाड़ी आई थी ये सुमन मूलगांवकर के नाम पे थी. Why they did it? Because they appreciated his initiatives. He had asked that Tata Motors should bring an SUV. In fact, Sumo was the first SUV after Jeep in our country. In fact, मैं SUV भी नहीं कहूंगा उसको, it was a multi-utility vehicle, MUV kind of. लोग भी बहुत सारे बैठ सकते हैं, आप सामान जितना भरो भर सकते थे, वजनदार गाड़ी एकदम दंडकट म्हणतात ना त्याला, that kind of vehicle. The largest selling vehicle was Tata Sumo. Tata Motors revived their business only because of Sumo. Otherwise, Tata Motors car industry में survive कर ही नहीं सकते. It allows the freedom to think and work on new ideas to employees. तो एम्प्लॉय आपके पास एक नया तरीका भी ला सकते हैं. हाँ, जरूरी नहीं है कि हर तरीका सही होगा, बट जो तरीका सही है उसको इंसेंटिवाइज करना जरूरी है. It helps in creating the healthy organization culture, क्योंकि उससे क्या होगा, that person will be feeling कि ये लोग मेरी सुनते हैं तो मैंने भी इनकी सुननी चाहिए, and that brings a kind of healthy organization. Team India is not able to survive whenever they are not working as a team. ऋषभ पंत आया, कहता है मैं तो जाके 2-4 सेंचुरी मार के आएगा, 90 पे आउट हो गया है. रोहित शर्मा कहता है मेरा नाम कोई ले ही नहीं रहा, मेरे को तुमने पिछले वाले मैचेस में नहीं लिया था, मैं तुम्हारे लिए नहीं खेलेगा. Whereas in the previous matches in Australia, everyone took the responsibility and they all worked together and they got the success. So Esprit de Corps implies union is strength.
मिल बांट के काम करोगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे. The organization works on group efforts, and therefore human resource is very important asset for the organization, and the leader of the manager has to create that environment of team. हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे तो we will get the success. He has to incentivize the people that we have to work in a team. Am I right for all? So that's it for the principles of management which are laid down by Mr. Fayol. Right? साइंस वालों का शुद्धिकरण करने की कोई स्कीम है क्या? उसको धर्म परिवर्तन कहते हैं बेटा. वी हैव अ सेपरेट बैच फॉर दैट. इनफैक्ट